ठीक है, let's continue. So the first method of preparation for both aldehydes and ketones, it was from alcohols. In alcohols, we have seen two methods of preparation. First one was by the oxidation method, and the other one was using catalytic dehydrogenation. The second method of preparation is from hydrocarbons. Please write second from hydrocarbons. In hydrocarbons, the first method of preparation is by the hydration of alkynes. Hydration of alkynes. Okay. Yes, so sir, showing the how the reaction is occurring. So we break this up, don't right now. We have alkyne. Let's suppose we have R, carbon with a triple bond, carbon. Then we have another R group, plus we have H2O. For this, we need some catalyst. That catalyst is HgSO4, mercury sulfate, and we need H2SO4. Okay. Next thing is that what will happen? Water is going to add onto the alkyne. So when water is going to add addition to H2SO4, one of the carbon atom will get hydrogen and the other carbon will get OH. Okay, this is water addition is the result. We are not taking the case of symmetrical alkyne, meaning both of these alkyl groups are same. Now, what will happen here? We'll get R, carbon with a hydrogen atom, double bond, carbon with oxygen, and then hydrogen, the OH like this. Now, which is further bonded to alkyl group. If you look at this particular position, then the hydrogen atom, it will be having a highly delta positive charge because it is connected with the more electronegative oxygen atom. And just beneath the hydrogen, you have a high electron density of the pi bond. And if you remember the formation of pi bond, it forms something like this. We have one p orbital, the other p orbital is like this, parallel. And if I draw the molecular orbital, then these two lobes are interacting with each other. These two lobes are also interacting. And you will get something like this. This is the internuclear axis. So here is the atom, and here you're having pi. So the pi electron, it is very near to the positive charge of hydrogen atom. And that is why what happens, this pi electron, it can immediately attack onto the hydrogen atom like this. The hydrogen breaks the bond. This bond is bound to this carbon and oxygen. So we get tautomerism here, which is kind of reversible, but it is more preferred towards the keto form. इसको tautomerism बोलते हैं. अगर थोड़ा सा कहीं याद होगा आपको, maybe you remember this word. Harsha, you remember tautomerism? Yes. If you remember the word, that's enough. बाकी तो हम दूसरे चीज पढ़ी रहे. So this carbon atom will get another hydrogen. The hydrogen from OH, single bond, carbon with a double bond O, and the R will be as it is. So the change that is happening here is from RCH, double bond carbon, R, and this carbon atom, it is having OH group. Now this carbon atom, it is having double bond, so it is ene, and it is having OH group also, so it is all, so it is enol. We call this form as enol form. And once this electron transfer or the proton transfer occurs, we call this keto form, R, CH2, C double bond O and R. And this is keto. इसको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं, या इन जनरल इसका क्या नाम हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म. Understood, Harsha? Yes. ठीक है, please copy this down. Hello, hi Rishita, how are you? So what about you? I'm good, I'm good. What happened? काफी दिन से आप नहीं आ रहे थे क्लास. हाँ sir, I had exams, PA1 exams.
थर्सडे को आपने, थर्सडे आपके स्कूल थी क्या? थर्सडे वाज हॉलीडे। No, sir. We had school. अच्छा, तो बकरीद हॉलीडेज, व्हाट वर द डेट्स Yeah, फॉर बकरीद? Bakrid holidays we had that Saturday, Sunday, Monday, and Tuesday. अच्छा, ओनली टिल ट्यूसडे। अच्छा अच्छा। Yes, sir. I तो thought the यू गॉट, class was going to be on in the evening. That's why I said okay. वो नहीं नहीं, so I could not take the class on Saturday ना। इवनिंग में तो मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस विल रेयरली बी हैपनिंग इन इवनिंग। हर्षा, आपकी आपकी कल स्कूल है आपका? यू हैव स्कूल टुमारो हर्षा? Yes, sir, it starts from tomorrow. इट्स व्हाट? It starts from tomorrow, sir. इट स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। तो कॉपी करिए रिशिता, आप भी। Yes, sir. Raise your hand once you're done. Sir, do biomolecules come under organic chemistry? हाँ, बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट। Although it is very different to the chapters that are the first four chapters of organic chemistry, but बायोमोलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही रखा जाएगा। with a pure term। थोड़ा सा आई होप आप समझ रहे होंगे व्हाट इज हैपनिंग। सो आई विल राइट इट, ठीक है, हाउ टू मेक द प्रोडक्ट, एंड देन व्हाट वी विल डू, we will do some problems. Now here this is an addition reaction, so this addition reaction it is also going to happen according to the Markovnikov's addition, okay? So the OH, it is going to attach on the carbon atom that is having less number of hydrogen, ठीक है? उसके एग्जांपल्स हम लोग कराएंगे, बहुत ही कम एग्जांपल्स है उसमें। So please see, OH attaches on that carbon atom which has lesser number of
hydrogen atom, lesser number of hydrogen atom, and the carbon that gets the OH becomes carbonyl carbon after tautomerism. ठीक है? So let me explain this with an example. Let's suppose you have CH3 carbon, triple bond carbon, and a hydrogen atom. If I look at the triptych, what are the reagents here? तो यहाँ पे reagent में ना बहुत shortcut में आपको इस तरह से दिया जा सकता है. Water, comma देके आपको दे देंगे Hg2+, and here they can write H+. So HgSO4, instead of HgSO4, they are writing Hg2+. Instead of the acid, sulfuric acid, they are writing H+. ठीक है? So how to do this? First of all, we'll identify the reactive part. So reactive part is the triple bond here. You have to identify that this is what? This is the hydration of alkyne. And this reaction is what? It is hydration of alkyne. यहाँ पे this is quite useful. HG. HG से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. ठीक है? Now what are the reactive parts? So we have carbon A and carbon B. Both of these are having triple bonds. Now, according to the Markovnikov rule, the carbon atom which is having less number of hydrogen will get the OH. आपके पास वाटर जो टूटेगा, वाटर कैसे आएगा? यहाँ पे आपके पास H आएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? Sorry. The carbon which is having less number of hydrogen will get the OH. तो इसको OH मिल जाएगा और इधर आपको H मिलेगा, right? Something like this will happen. You'll get CH3, carbon, OH, double bond, CH2. And the carbon which is having OH will get converted to carbon. यहाँ से ये hydrogen इधर shift हो जाएगा और double bond इधर आ जाएगा. You'll get CH3, carbon, CH3, and double bond. Make sense? If somebody tell me. Yes. देखिए डायरेक्टली आंसर कैसे लिख सकते हैं आप? देखिए, जैसे सपोज यू हैव 1 2, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से. You need to identify how many hydrogens are there. So if you see here we are having 0 hydrogens and here we are having 2 hydrogens. ठीक है? तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एल्काइन से आप सीधा एल्केन बना देंगे. द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 कार्बन एटम्स. ठीक है? एंड जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे आपको डबल बॉन्ड ओ लगा देना. दैट्स इट. दैट्स द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू. 0 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन. ठीक है? व्हाट आर द रिएजेंट्स? रिएजेंट्स वही सेम है. बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बताएं. टेल मी गाइस. Now, by the way, if I have another example like this, triple bond is here. Both of these carbon atoms are symmetrical. Okay, so in this case, you don't need to do anything. The दोनों symmetrical है तो कहीं पे भी आप लगा दीजिए. It's going to be same thing. Either you have double bond O here, or you have double bond O here. In both the cases, the compound is same. Name दोनों का same ही आएगा, right? So the compound is same in both the cases. Understood these two? So यहाँ पे देखिए, variety of questions can be asked. For example, this particular product, what is this? This is 1 2 3 4 carbon atom. So it is butane 2-on, and even this is butane 2-on. So butane 2-on can be made by 2 different alkynes. Okay. So questions, मतलब from different type of questions can be asked. इन सब चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखिए. Philip, please write this down. Copy this. If you want to make an, for both of these cases, we have already got ketones only. The only aldehyde which is possible in this case, it is going to be from ethyne, CH, triple bond, CH. Now both the carbon atoms are having same number of hydrogen. तो किसी एक में भी आप डबल बॉन्ड O लगा दीजिए. पहले आप क्या कर दीजिए? CH3, सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, and then H here. ये वाला समझ में आया? फोर्थ बता दीजिएगा एक बार समझ में आया या नहीं. Because fourth is a bit different from the previous cases, so na, we are getting an aldehyde. अगर पूरा प्रोसेस देखिएगा तो it is going to be CH2 double bond CH OH
Once again, tautomerism will happen. This hydrogen will go here, and this double bond will move here, and you will get CH3, CH3, CHO. Until here. अच्छा आप जेई के लिए और मतलब ऑनलाइन ही क्लासेस कर रहे हैं या ऑफलाइन जा रहे हैं? Online, sir. So you have taken a dropper batch course या फिर 12th कर लिया आपने? I took for 12th. जो भी था फिर 11th से क्या कीजिएगा? Sir, I'll try to manage in the summer vacation. You will? I'll see one shot CS or something in the summer vacation. Have you joined any test series? No, sir. Test series join कर लीजिएगा. Even Rishita, if you are like if you guys are serious about JEE ना, then I think Rishita को तो आसानी होगी. दुबई में I think you will get some test series type of thing. Although you can do it online also. ठीक है. So monthly at least get a test series. Because I don't know Sir. anyone who has. Rishita, tell me. No, sir, continue. I'm saying that I have not known anyone who has cracked G without the test series. I mean, with good percentiles. And even though you guys need a bit less because of DASA, but if you have more percentile, तो फिर आपके पास options ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना? So if you have decided a year before, you have quite good time to score good marks. Okay. So also one more thing is that even though like from wherever you are doing, like Rishita, you're doing from us, but take a test series from some other institute. Okay. Yes, sir. Got it? Enough. Because that's the best way to test yourself. Okay. You may be having some test series from Learnivio also, but take a test series from some other institute also. Okay, same goes for Harsha. So where are you doing, by the way, online? Sir, I think you should. looked at physics only. 300. Who is teaching chemistry? Amit Mahajan, sir. Achha, Amit sir, what is he teaching? Physical, organic, and organic. I think he teaches all, but organic chemistry is his. Sir, this year he's teaching physical chemistry. So for your batch, he's taking physical chemistry. Physical chemistry solutions and electrochemistry on so only 12th. Yes, sir, only 12. Okay. Also, you need to take test series because they have test series, but that is online only for from physics. So it is all like completely online test series and everything. Okay. And what about other organic chemistry, inorganic chemistry? Who is taking those subjects? Sir, I'm not sure about inorganic. Mhm. They recently started organic, but I haven't attended. So. So you're not doing that. What about physics and mathematics? Who is taking physics? Maths, it's Sachin, sir. And Sachin sir is physics, fine. Salim, sir. Salim sir is also fine. Chemistry आपको इधर Salim sir मिले उधर आपको. Okay. चलिए. Okay, fine. So one thing we can say from here is that the smallest aldehyde is formaldehyde, that is HCHO. That cannot be prepared from this method because we at least need what? We at least need 2 carbon atoms, right? So formaldehyde, because we are preparing from alkyne में triple bond होगा. Triple bond is possible only if you have at least 2 carbon atoms. So 1 carbon atom का कुछ नहीं बन सकता. So formaldehyde cannot be prepared by this method. Also, aldehydes other than acid aldehyde can also be known.
aldehydes other than acetaldehyde cannot be prepared by this method. Why we cannot prepare anything other than acetaldehyde? Because we have seen, let's say, if you want to get CHO, this carbon atom, the last carbon atom should get the OH. And in order to get OH, this carbon atom should have least number of hydrogen. And also terminal. It should be in the terminal carbon. Why? Because aldehyde is always in the terminal carbon. If you have C double bond O in any of the middle carbon, it is going to be ketone. It can never be aldehyde. Aldehyde हमेशा कहाँ रहेगा? Last carbon atom. So this carbon atom should have least number of hydrogen and also terminal. But that is not possible. If the carbon atom it is having a triple bond and it is in the last, will have at least one hydrogen atom. Okay? And if this triple bond it has carbon and some other R group, so this carbon is always going to have what less number of hydrogen atoms than the terminal, except in the case of ethyne, where both the carbon atoms are going to have one hydrogen. ठीक है, एक हाइड्रोजन से कम हो नहीं सकता. That is why what happens, only and only what acetaldehyde can be formed, and other than acetaldehyde you cannot form any other aldehydes. By the way, the reason they will never ask reason, because the semantics or the language of the reason is quite complex, है ना, कि last carbon atom में होगा उस पर, you can understand that, but in order to write it in words it's very difficult. So they will never ask why only acetaldehyde will be formed, but they can give you a question like which of the following aldehydes could not be formed, or which of the following compounds cannot be formed by the hydration of alkyne. Now in that case, if you have any aldehyde other than acetaldehyde, so you will take that particular option. Okay, so only acetaldehyde can be prepared from this particular reaction. चलिए, moving on, next topic, ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था. I think both of you attended this particular topic in the JE classes. By ozonolysis. Ozonolysis में दोनों थे ना तब तक आप? हर्षा, you were there? Yes. रिश्ता आप तो थे? Yes, sir. ठीक है. So ozonolysis, now it has a particular name, ozonolysis. So this becomes it becomes a name reaction, even though it is not named on any scientist, but it becomes a name reaction by ozonolysis. So we have to write here alkene reacts with ozone to form ozonide, which on the subsequent cleavage with zinc dust gives corresponding aldehyde and ketone. Gives corresponding aldehyde and ketone. So basic reaction, पुरानी बातें आ गई अब तो. Carbon will be having a double bond with another carbon atom with some groups attached like this. Okay, we will add here ozone O3. This will give you carbon with the two bonds as it is. With an oxygen atom here, with another oxygen atom, so another carbon atom here with the two bonds as it is. There will be another oxygen atom here, there will be another oxygen atom here. By the way, this is going to be a reductive ozonolysis, है ना, because we have studied both of them. Ozonolysis एक तो oxidative होता है, but zinc जहाँ पे आता है ना, zinc oxide बन जाता है, जिसकी वजह से it is एक जो oxygen atom है वो बच जाता है. Okay, so there is a cleavage thing like this because of zinc dust, Zn, and Zn in the presence of water, and you will get from this carbon atom you will get C double bond O, plus you will get oxygen with a double bond carbon, and then it is going to have two groups as it is. Okay. So basically what we need to do, we need to break this particular bond like this.
एंड ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, इसके पास एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन एटम। राइट, नाउ रेज योर हैंड वंस और once. Wait for this. From simpler questions, and slowly we will be leveling up. And we will be also doing a retrosynthesis here, that we will go from products to reactant also. See here, guys. First question, we have CH2, double bond, CH2, in the presence of O3. And in the second, we have zinc in the presence of water. So we'll break it like this. So once you break it, you will get CH2, bring a double bond, oxygen. Plus, once you have broken, oxygen gets a double bond, and then CH2. Now, what is this? These compounds. These compounds are actually what? These are carbon with a double bond O and hydrogen on these carbon, and here also hydrogen. So this is formaldehyde. Formaldehyde. Okay, formaldehyde. Second, you have, let us suppose, CH2, double bond CH, single bond CH3, same reagents. So you will get, break it like this. You have CH2, double bond oxygen. Then once you have broken, so here you will write oxygen with a double bond. What is left? CH3. So CH2, this is again formaldehyde. This is what CH3CH2, it is acetaldehyde. Huh? This is methanol, this is ethanol. You can also get these two products, how to go back to the reactant, remove the oxygen atom and club and join the double bonds. Right? Remove the oxygens and join the double bonds. You will get the alkene. उस तरह के सवाल भी करेंगे हम. Next, आप लोग देखिए, for example, if you have something like this, double bond here, same reagents. So we will break it like this. आपको मिलेगा एक इस तरह से double bond. Plus you will get a double bond like this and oxygen यहाँ पे. Okay. Now both of these compounds are same only. And what is the compound? You have one carbon atom and this carbon atom. This carbon atom will also be having how many bonds we are having? Here we are having 3 bonds, as you can see in this carbon atom, a double bond and a single bond. It will be having one hydrogen. Same here, it will be having one hydrogen. And if you see this compound, it is actually CH3CHO. And again, acetaldehyde. Okay. Both of these are same compounds, acetaldehyde. Third, for example, if you have same things, but we have one CH3 group here also. So what we will do? Everything as it is. बस वो डबल बॉन्ड में ऐसे यहाँ पे कट कर देना, ये कट कर देना, डबल बॉन्ड कितना हिस्सा बचा, and this will be ending with oxygen atom. Plus the next fragment will be double bond like this, single bond like this, and here you'll be having oxygen. Right, so then this is CH3CHO and this is acetone. This is acetone. CH3, C double bond O and CH3 once again. Okay, we can write another example. C3 दो बार लिख दिया हमने. 6, 4, 5. CH2. Okay. Again, the same reagents.
So we'll break it like this. First we have cyclopentane, and there is a double bond. Double bond can be क्या oxygen atom plus we have again oxygen double bond CH2. याद आ गया ऋषिता and हर्षा ये सब नोटेशन नहीं Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कीजिए प्लीज कॉपी को डाउन वेटिंग फॉर ऋषिता ऋषिता आप ना थोड़ा ध्यान से लिखिएगा समटाइम्स यू डोंट राइट द प्रोडक्ट्स वेरी केयरफुली यू मिस सम सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ठीक है तो एटलीस्ट इन द नोट्स आपके पास मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए ओके Yes, sir. Can you go up to the first one? 1 second. दिस वन Yes, sir. Yes, sir. Got it. Thank you. राइट सम एग्जांपल्स 6 में देखिए इवन तो यू हैव डन लेकिन भैया आपने अभी रिवाइज नहीं किया होगा तो थोड़ा सा लग सकता है कुछ आपको डबल बॉन्ड हियर है ना एंड वी आर हैविंग द सेम रिएजेंट O3 सेकंड स्टेप में ZnH2 सो अगेन सेम चीज करना है कुछ ये तोड़ दिया आपने सो यू विल गेट वंस यू ब्रेक दिस डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा हाउ मेनी कार्बन एटम्स 1 2 3 4 एंड 5 तो 5 कार्बन एटम्स आपने ये बना दिए ठीक है और दिस 5 कार्बन एटम फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड था डबल बॉन्ड कर दिया आपने सेल एटम फिफ्थ कार्बन में भी था डबल बॉन्ड कर दिया आपने याद आ रहा है कुछ कुछ हर्षा एंड रशिता Yes, sir. ठीक है और यू कैन राइट इट लाइक दिस ये आपके पास CHO CHO नाम क्या हो जाएगा इसका पेंटेन 1,5 diol since we are having di here d here so that's why we will write e also ना pentane पूरा लिखते हैं ठीक है you remember consonant है यहाँ पे इस वजह से if it was direct al होता ना as it was in the first case al कहाँ लिखा था हमने खैर छोड़िए याद नहीं है हमको 7 ठीक है सेम reagent so यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा and ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा so what is left here here you have CH2 ना यहाँ पे भी क्या है हमारे पास यहाँ पे भी CH2 है हमारे पास so you will get 2 molecules of this CH2 double bond O ठीक है प्लस आई होप ये 2 CH2 डबल बॉन्ड O तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा CH2 double bond O from here and CH2 double bond O from here so what's left is we have something like this जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन बेसिकली इट इज व्हाट इट इज CHO CH2 only 2 carbon atoms ठीक है both of these are same thing Sir, so we should break every double bond in the compound. in the every double bond
There is one question in NCERT which is like this. We have this reagent and this is the product. What will be the reactant? बेसिकली उन्होंने रिएक्टेंट यहाँ पे पूछा हुआ, रिएक्टेंट क्या होगा? तो बहुत आसान है, इसमें क्या करना है आपको, यू दो मॉलिक्यूल्स इसके रहेंगे ना, समटाइम्स दे विल नॉट गिव यू टू मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल नहीं भी दिया हुआ, बट इफ यू सी ओजोनलिसिस हो रहा है यहाँ पे, देन यू कैन टेक टू मॉलिक्यूल्स लाइक दिस। ठीक है, बेसिकली क्या करना है आपको, रिमूव द डबल बॉन्ड, सॉरी रिमूव द ऑक्सीजन एटम एंड जॉइन द डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन एटम आपने रिमूव कर दिया, तो बचेगा कुछ इस तरह से, है ना। इसी का अगर ओजोनलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंपाउंड। मेक सेंस? बात आ रही है समझ में? Yes. Yes, sir. हिंदी कॉपी कीजिए। रिचिता, आपने लास्ट लेक्चर्स मिस किया, कुछ वीडियो वगैरह में देखा है? आई थिंक लास्ट संडे भी Yeah. Yes, sir. सारा कंप्लीट है आपका? हाँ थर्सडे सर, वाला भी? थर्सडे वाला फुल नहीं देखा, बट सैटरडे और संडे वाला देखा। अच्छा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट है, इट्स जस्ट रिवाइज अ बिट, है ना यहाँ पे। तो देखिए जरा, तो व्हाट वी हैव, गिव द गिव नेम्स ऑफ रिएजेंट टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, एंड देखिए हेक्सेन 1 ऑल, सो वी आर गोइंग फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, कैसे करना ना वो हम आपको यहाँ पे ज्यादा बता रहे हैं, याद नहीं रखना आपको कुछ भी इस तरह से कि हेक्सेन, और आपको बस देखना कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो हेक्सेन 1 ऑल टू हेक्सेन अल, सो वी आर गोइंग फ्रॉम, फर्स्ट में हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अल्कोहल से एल्डिहाइड। अल्कोहल से एल्डिहाइड के लिए बताइए रिएजेंट क्या हो जाएगा, अल्कोहल टू एल्डिहाइड, व्हाट शुड बी द रिएजेंट? आना चाहिए ना, कुछ तो दिमाग में आना चाहिए, लाइक व्हाट शुड बी, व्हाट वाज द टॉपिक, लाइक अल्कोहल से कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, याद आ रहा है किसी को? दिस वाज देयर इन द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर्स एज वेल एज इन दिस चैप्टर एल्डिहाइड। ये बताओ तो, नहीं किसी को याद? विचिता, हर्षा, वेरी गुड, पीसीसी, है ना। या फिर एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक दिस, है ना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और वी कैन राइट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वी कैन राइट कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट 573 केल्विन। याद आ रहा है हर्षा, याद आ रहा है आपको? No, sir. नहीं याद आ रहा है हर्षा? हाँ, No, sir. नहीं याद आ रहा? और ये आंसर देखने पे याद आया कि नहीं? ओ अच्छा, अभी तो आपने किया नहीं है ना वो जो मिस किए थे आपने लेक्चर्स, पीडीसी पीपीसी वाला, Yes. राइट? हाँ वैसे भी ठीक है, बट ये अच्छा चलिए ठीक है, याद नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट डन अगेन सेम हियर। यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, also one more thing, whenever we are oxidizing, the number of carbon atoms remain same, so that is also one. Here also we are having 6 carbon, here also we are having 6 carbons. If the carbon atoms are changing, number of carbon atoms are changing, then you have to think of some other reagent. ठीक है, some other transformation, not oxidation of alcohol to aldehydes. यहाँ पे देखिए we again have alcohol to one, cyclohex. The main parent chain is still the same. What we are changing, we are only changing from alcohol to ketone. यहाँ पे भी सेम ही हो जाएगा ना, सेकेंड में we are going alcohol to ketone. So reagent could be this or any weak or यहाँ पे एक और आ जाता, CrO3 is also good oxidizing agent in this case. ठीक है, third is p-fluorotoluene. We have p-fluorotoluene to p-fluorobenzaldehyde. यहाँ पे देखिए बच्चे क्या परेशान हो जाते हैं फ्लोरो वगैरह देख के, कि फ्लोरो हाइड्रोल्केन हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? डोंट हैव टू वरी अबाउट हाइड्रोल्केन हाइड्रोजन, व्हाई? बिकॉज पी फ्लोरो पे तो कुछ नहीं हो रहा है ना, व्हाट इज हैपनिंग, ये पी फ्लोरो रहे चाहे नहीं रहे उससे कुछ मतलब ही नहीं है, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड जाना है। मेक सेंस, ये दोनों, because nothing is happening to the fluoro part. Rishita and Harsha, make sense? Yes, समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो फ्लोरो से हम लोग को मतलब ही नहीं है, व्हाट वी आर
more concerned with, we are more concerned with the toluene to benzaldehyde. What is the transformation? How can we do that? Tell me, guys. You can flip the pages. You can flip the pages. I know basically what we are going. We're going from toluene. Toluene को कैसे लिख सकते हैं? Benzene के लिए pH, pH3. Say we need to go from pH, pHO. सही है भाई? Method of preparation of aldehyde only वहीं पे आ जाएगा. Acetic anhydride. नहीं, in the presence of what? In that two होते in the presence है. We need chromic oxide, CrO3 in Yes, sir. acetic anhydride. और बताइए एक और reagent है. There's one more reagent or what we can use. CO and HCl. CO and HCl. नहीं वो तो सिर्फ कैटरमैन कोच रिएक्शन आप कह रहे हैं वो बेंजीन के लिए होगा ना. बेंजीन है ना, बेंजीन से स्टार्ट होता है वहां पे. ठीक है. वन मोर एक है याद हो, शायद आप लोग को याद हो. स्टार्ट किया ना तो दिमाग में प्रेशर डाल. 2O2. वाटर H2O2 नहीं, H2O2 नहीं. फ्लिप द पेजेस ना, फ्लिप द पेजेस. क्या कह रहे हैं? फ्लिप द पेजेस. हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं हर्षा? Cl2. Cl2, ओनली Cl2 And H2O. ओनली. अच्छा साइड चेन, ठीक है हाँ, साइड चेन क्लोरीनेशन ना. ठीक है Cl2 है. और एक और बताइए, एक और है नेम रिएक्शन. तो वन मोर रिएजेंट कुड बी Cl2 एंड देन फर्स्ट स्टेप में Cl2 एंड देन सेकंड स्टेप में वाटर. ठीक है. और देयर इज वन मोर, एक और है, एक और नेम रिएक्शन है भाई, नेम रिएक्शन. CH2 and CH2 CS2. CS नहीं, CS2 देखिए हम बताएं वो सारी चीजें, वो सॉल्वेंट है यार. CS2 सॉल्वेंट है. रिएजेंट बताइए, रिएजेंट क्रोमाइल क्लोराइड है ना, CrO2Cl2 है ना. ये चीजें हमने, आई होप हमने बताया हो. आई वैसा हमको मिस्टेक नहीं करेंगे कि नहीं बताया होगा. देखिए ऑल्सो सी आई राइट समटाइम्स, यू कैन सी ना, आई राइट द होल थिंग कि मतलब क्या हो रहा है उसमें हम लिख भी देते हैं. समटाइम्स आई डोंट राइट. सो व्हेनेवर आई राइट ना, प्लीज रीड दिस आल्सो. दैट विल गिव यू एन आइडिया दैट दिस इज द रिएजेंट. ठीक है. एंड देन दिस इज द सॉल्वेंट. ओके. बिकॉज रिएक्ट विद क्रोमाइल क्लोराइड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है फिर CS. It forms a brown chromium complex and so on and so. Okay. चलिए अगला इथेन नाइट्राइल. So we are going from nitrile to aldehyde. क्या यूज करेंगे? नाइट्राइल टू aldehyde. नाइट्राइल टू aldehyde. CN से CHO. What should we do? What should we use? What is the reagent? बोलो भाई. फ्लिप द पेज ना, फ्लिप द पेज. आपको तो छूट दी हुई है हमने. I want you guys to know where the things are present in your notes. हाँ जी. Rishita and Harsha. So the thing we did before, ozonolysis. नहीं, नाइट्राइल से एल्डिहाइड कराना है हमको. नाइट्राइल से एल्डिहाइड. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में होगा ना ये तो. एल्डिहाइड्स ऑफ कीटोन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली में होगा बिकॉज नाइट्राइल. Oh yeah, SnCl2. हाँ उसके बाद बस SnCl2, उसके बाद कुछ नहीं. In the presence of HCl. हाँ एंड देन और भी कुछ तो होगा. उसके बाद भी तो कुछ है. उसके बाद वाटर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ना. Yes sir. SnCl2 और सेकंड स्टेप में H3O प्लस कर दीजिए आप, है ना. तो उसमें HCl भी आ गया आपके पास. और ठीक है, इससे लिखना पड़ेगा SnCl2 का. बट SnCl2 इज द मेन रिएजेंट. ठीक है. SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एसिडिक हाइड्रोलिसिस. और एक रिएजेंट है और डाइवाल H. प्रैक्टिस कीजिए गाइस, प्रैक्टिस कीजिए. वी हैव एलाइल अल्कोहल. एलाइल अल्कोहल क्या होता है? दिस इज एलाइल अल्कोहल ना. This is sp3 carbon directly connected to sp2. sp3 is double bond. Allyl alcohol say propenal. So something like this.
यहाँ पे 3 कार्बन एटम, अल मतलब CH। सेकंड दिस इज PCC से हो जाएगा ये ना, ब्यूट टू इन टू इथेनॉल। हाँ यहाँ पे देखिए दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगला जो 6 वाला, इथेनॉल है CH3CH। आउटपुट की तरह रिएजेंट, क्या रिएजेंट मिलेगा? What should be the reagent? प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा आज की क्लास को। अगर इसी को हम इस तरह बना देते तब तो फिर उछल खेल के बोलते क्या रिएजेंट होगा। व्हाट विल बी द रिएजेंट, टेल मी। अब तो बता दो ऋषिता एंड हर्षा। ओजोन एंड हाँ ZN। ओजोन है, बहुत बढ़िया है ना ओजोन है। तो ये कुछ अलग है क्या? यू नीड टू ट्रेन योर आइज है ना, ठीक है, पहली बार में नहीं आएगा, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ओजोन हमने जो पढ़ा है तो काफी दिन भी हो गए, बट प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आ गया ना, व्हेन आई मेड सम प्रोडक्ट राइट इन सर्टेन वे। ऋषिता यू आल्सो गॉट दैट ना, यस और नो? ओजोनलिसिस, Yes. सेकंड स्टेप में ZnH2O, Yes. ठीक है। तो प्रैक्टिस, चलिए कॉपी दिस डाउन एंड बाय द वे यू जस्ट नीड टू राइट। जहाँ पे देखिए सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा, गिव नेम्स ऑफ रिएजेंट। आपको कोई जरूरत नहीं स्ट्रक्चर बनाने की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, नो नीड टू मेक द स्ट्रक्चर्स। यू ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशंस हैपनिंग। अल्कोहल से एल्डिहाइड, है ना, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, then nitrile say aldehyde, alcohol say aldehyde, then you are going from alkene to aldehyde. So think in terms of functional group transformation rather than the complete compound. ठीक है, ब्यूट टू इन हो, चाहे आपके पास कुछ दूसरा इन होता, इन से अल जाना है बेसिकली, नाइट्राइल से अल, वेदर इट इज इथेन नाइट्राइल और इट इज प्रोपेन नाइट्राइल या कुछ भी नाइट्राइल हो, फ्रॉम नाइट्राइल टू अल। ठीक है, ट्राई टू थिंक इन दोस टर्म्स। आई एम नॉट सेइंग कि अभी बिल्कुल आ जाएगा आपको, ठीक है, ट्राई टू थिंक इन दोस टर्म्स। डोंट वरी टू मच अबाउट, ट्राई नॉट टू वरी। हम आपको बोल देंगे डोंट वरी तो थोड़ी ना नहीं वरी करने लगेगा। ट्राई नॉट टू वरी अबाउट द हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ओ माय गॉड कितना बड़ा, डोंट थिंक अबाउट दोस थिंग्स, है ना। ऑल से ओन जाना है। पी फ्लोरो हैलोजन भी आ गया, ओ माय गॉड। मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, नहीं मल्टी कंसेप्चुअल नहीं, बिल्कुल सिंपल है, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, कीटार्ड रिएक्शन सिंपली करते हैं तो हो जाएगा, CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, साइड चेन क्लोरीनेशन से भी हो जाएगा। Copy this down, raise your hand once you're done. प्रैक्टिस बट, है ना, छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। आज की चीजों को आज ही कंप्लीट करने की आदत रखिए। बस ये चैप्टर, उसके बाद अगला चैप्टर अमीन, फिर खत्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ज्यादा नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देख रहे हैं चीजें किस तरह से रिपीट भी हो रही है ना। ऑल्सो ट्राई टू डू कन्वर्जन्स। एनसीईआरटी में जो आई हैव taken the class on conversions from haloalkane and halorine, ना, वो वीडियो आप लोग के पास है। एंड आई स्पेशली ask you people to watch that video is because वो वीडियो आपके पास हमेशा रहे। So whenever you are doing conversions or whenever you are starting organic chemistry, ना, I always ask कि आप उस lecture से start करें, because that lecture is going to give you a lot of idea about the reactions. Another thing that people generally forget to revise and study is the give reason type of question. Why this happens, why this method is not a preferred method, why this method is a preferred method, ठीक है, ये चीज अक्सर लोग भूल जाते हैं। The another thing the people they usually forget and they do not focus or rather study intensely is the chemical distinction tests. तो केमिकल डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, उसको हम अच्छे से कराएंगे, बिल्कुल, है ना, बिकॉज देयर आर ऑलवेज 2 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स वहां से जरूर आता है, 1 मार्क्स तो कम से कम रहेगा डिपेंडिंग ऑन द सेट्स। बट इफ आई टेक एन एवरेज, और एवरेज क्या है, एवरेज मीडियम की अगर हम बात करें ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल गेट 2 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम द डिस्टिंक्शन। Sometimes it is 1 marks, but that another 1 marks is indirectly asked in a particular question. Okay, copy this down, raise your hand once you're done, guys, raise your hand once you're done. आप स्कूल से कितने बजे तक आ जाते हैं हर्षा? So normally it's 2 p.m.
but this 1 week we have online classes. ऑनलाइन कर रहे हैं मतलब आप स्कूल नहीं आना आपको? It's only for 1 week because it's too hot here. कल आपको स्कूल नहीं आना? No, sir. It starts from 8 to 12. ओके, तो आप अटेंड करते हैं ऑनलाइन या फिर? Yes, sir. अच्छा, कैन आई टेक अ क्लास टुमारो मॉर्निंग में? पॉसिबल है? दो, अगर आप 12 बोल रहे हैं देन 12 यहाँ पे 2:30 बज जाएगा एंड 8 विल बी 8 8 8 8 8 8 7 to 8 कर सकते हैं आप क्लास? हर्षा, So, पॉसिबल नॉट पॉसिबल? टुमारो, जस्ट टुमारो, organic. पॉसिबल नॉट? हाँ, यही ऑर्गेनिक जो आपकी शाम में फिर क्लास नहीं होगी, विल नॉट हैव टू डू क्लास ऑन इन द इवनिंग। Okay, sir. हो सकता है 7 इज पॉसिबल? Yes, sir. It's possible. 7, that means it will be 9:30 for me. What about you, Rishita? Yes, yes, sir. आपका 7 नहीं होगा, it will be 8 for you, 8 a.m. Yes, sir. 8 to 9. 8 to 9 is fine. Yes, sir. Okay. पक्का ना? सो जाते हैं आप लेकिन, याद है आपको? भूल भूल के आप हाँ सो सर. जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल उठ जाना है। Yes, sir. 7 I'll to, wake up earlier. you will wake up earlier, okay. By the way, हर्षा पे 8 p.m. शार्प स्टार्ट हो जाती है क्लासेस, लाइक अटेंडेंस अटेंडेंस बिल्कुल स्ट्रिक्ट, वेयर इज हर्षा, वेयर इज हर्षा, फिर कॉल वॉल आने लगता है, ऐसा हो जाता है क्या बिल्कुल? 8 a.m. सॉरी, योर स्कूल। So it's a bit strict only. It's a bit strict. So if 6:30 is fine, then आई डोंट, मतलब हमको रिश्ता पे उतना भरोसा नहीं है। ओह, सैडली स्पीकिंग, रिश्ता भूल आ जाती है। I'll set an हाँ, alarm. I'll wake up. It's fine. I'm fine with 7:30 as well. क्यों? तो अभी तो आप फाइन है बिल्कुल, आप लेकिन क्लास में आएगी। सर, यस सर, आई ओवर स्लेप्ट सर, फिर हम क्या करेंगे उस? नहीं ठीक है, इट्स फाइन, विल कीप, ठीक है ठीक है, वी विल कीप 1 hour ओनली। अरे ऐसा बिल्कुल आप पे कुछ ही नहीं हो, इट्स फाइन टू, मतलब हम बहुत ज्यादा ये नहीं करते हैं टू स्लीप। सोने पे क्या आदमी पाबंदी लगा? 7 to 8 p.m. ऐसे। We have one more student, Zaina, but I don't think Zaina is going to join because she's having tests. पर हम Zaina से कंफर्म कर लेंगे कि खैर रहेगी। ओके, चलिए मूविंग ऑन। आपके हमको हॉलीडेज का भी थोड़ा सा प्लान करना है। थिंग इज दैट मॉर्निंग्स में, मतलब राइट नाउ तो आई एम हैविंग हॉलीडेज, बट मेरा मॉर्निंग थोड़ा सा बिजी हो चुका है अब। पता नहीं इस बार हम कितने, how useful the summer holidays will be for you guys. If you remember, I used to take last year हमने लिया था ना क्लासेस, पता नहीं इस साल हम कितना क्लास ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। We'll see. At least I will try to take alternate 11th and 12th alternate days, इस तरह से हम कोशिश करेंगे लेने की। चलिए, राइट, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखिएगा, बहुत कम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, कंप्लीट दिस क्विकली। फर्स्ट पॉइंट वी विल राइट रिगार्डिंग द सॉलिबिलिटी, लिख देते हैं पहले, है ना, देन वी विल डू फॉर बॉइलिंग पॉइंट एंड हाफ। ठीक है, प्लीज राइट इट। Aldehydes and ketones are miscible in water.
are miscible in water. As the oxygen of aldehyde and ketone can form hydrogen bond with water. कैसे होता है? So you have carbon, double bond oxygen. There are some groups attached. So maybe this is carbonless from aldehyde or ketone. Can be both, right? Can be any. So this oxygen atom will be having lone pair electrons, and the hydrogen atom of water will be something like this. This hydrogen atom will be obviously having a delta positive charge because it is connected with oxygen that is very electronegative. It will be pulling electron density. Now this oxygen atom, which is having lone pair electrons, so high electron density and low electron density, so there will be hydrogen bond like this. So this is the hydrogen bond that is present between a carbonyl compound and hydrogen bond. That is why it is miscible. Now, obviously, the solubility or the miscibility of aldehyde and ketone inside water is only because of the carbonyl part, not because of the alkyl group, which will be present on the either side. Okay. So as the alkyl group will be increasing, the favorable part for the unfavorable, rather, I should say, the unfavorable part for miscibility or solubility is going to increase. So what will be happening? It will be unfavorable for the solubility also. As it was the case for alcohols, if you remember, solubility decreases, solubility decreases on increase in carbon chain length. Okay. Next, we will write about boiling point. Next one, लिखिएगा. I hope you're writing with me. If you're not writing, then please let me know. I will scroll up. Write in the boiling point of aldehydes and ketones are higher than non-polar hydrocarbons and weakly polar ethers. है ना? ethers चाहिए थोड़ा सा. Ethers are weakly polar, aldehyde and ketones are completely polar molecules. ठीक है? Next point. Boiling point of aldehyde and ketones are less than aldehyde and ketones are less than alcohols due to absence of hydrogen bonding. Okay, please understand, aldehyde on their own will not have hydrogen bond. Ketones on their own, they will not have hydrogen bond, because in aldehyde or ketone, hydrogen is not connected to electronegative element. कभी भी. Hydrogen is always connected to only carbon atoms. Okay? So that is why you don't have any very highly electrodeficient hydrogen. आपके पास oxygen तो है, the oxygen atom which is very electronegative, and it is going to have a high electron density in the double bond C double bond O. But that oxygen atom should have some attraction with the electron deficient hydrogen. Electron deficient hydrogen नहीं होता. तो वाटर में क्या होता है? वाटर has electron deficient hydrogen and oxygen तो है ही, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है. But on inside aldehyde only, inside ketones only, there will be no hydrogen bonds. Let's write a question and end this topic. Arrange in increasing order of boiling point. Your first one, CH3CHO. Second one, 2 carbon atoms and OH. Third one carbon atom, oxygen, and another carbon atom. तो ether हो जाएगा ये. Fourth option आप लिख लीजिए 1 2 3 carbon atoms. ठीक है? तो अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या क्या है.
So this CH3CHO is going to be polar. This is going to be hydrogen bond. This is weakly polar and this is non-polar. ठीक है, so highest boiling point will be for hydrogen bond, फिर polar, फिर weakly polar, फिर non-polar. So सबसे ज्यादा किसके पास होगा? It will be for B. B का सबसे ज्यादा. Then polar कौन है? A. And after that weakly polar, that is C, and then non-polar, that is B. Understood this, Rashita and Harsha? Yes or no? Tell me. Yes, sir. Raise your hand once you're done. नेक्स्ट लिखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज. सर स्टार्ट कर देते हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट कल की ही क्लास में लेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखिएगा ए, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ठीक है, देखिए जब भी आपसे कुछ बोला जाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो सबसे पहले रिएजेंट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज समथिंग दैट अटैक्स ऑन द कार्बन एटम, है ना, व्हिच इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड अटैक्स ऑन कार्बन एटम. एडिशन का मतलब क्या हो रहा है? वी आर हैविंग पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड से हट के क्या मिल जाएगा आपको? सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा. ठीक है, पाई बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें एडिशन वगैरह में याद रखिए. So basic mechanism for nucleophilic addition reaction of carbonyl compound is something like this. We have carbonyl compound with C double bond O. There are some two groups attached on this particular carbon atom. और साथ में आपके पास क्या है? Obviously there will be a nucleophile like this. ठीक है, तो nucleophile will be negatively charged, है ना, या फिर उसके पास higher electron density होगा, it will be electron rich. But this carbon atom, it is going to be what? Highly delta positive because it is connected with the oxygen atom with a double bond. Now what will happen? This nucleophile, which is electron rich, will attack on the electron poor carbonyl carbon. As soon as the nucleophile is going to attack comes the bond formation. So what will happen? This pi bond is going to break because carbon cannot form more than 4 bonds. ठीक है, तो it is going to break the weakest bond. Weakest bond कौन सा होगा? pi वाला bond weakest होगा. So we'll get carbon single bond oxygen. ठीक है, यहाँ पे आपके पास the two groups as it is, and फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? Nucleophile आ जाएगा. The nucleophile is here. Now, in this case, right now, this carbon atom, it is having p sigma bonds. So, यहाँ पे this is trigonal planar. Trigonal planar. When the nucleophile attacks, by the way, यहाँ पे negative charge आएगा oxygen के पास. When the nucleophile attacks, it becomes tetrahedral. ठीक है, तो sometimes high level of questions or others a bit deep only. Surface level ही है ऐसे, तो बहुत ज्यादा deep नहीं है, but बच्चों के दिमाग से छूट जाता है. Sometimes they ask questions in JEE ना कि in which of the following the carbon atom will undergo
a change in geometry, a change in molecular shape, ठीक है, उसमें अलग अलग एसएन में, एडिशन में, इसमें उसमें वगैरह वगैरह दिया रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और अदर दे कैन आल्सो आस्क व्हाट इज द चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ कार्बन एटम व्हाइल अंडरगोइंग अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड में विच ट्रांजिशन हैपेंस, तो यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल में जा रहे हैं। तो आफ्टर दिस व्हाट वी डू, वी जनरली ऐड H plus यहाँ पे in the presence of water. So this H plus is taken by the oxygen atom and we get a neutral compound something like this with OH, ठीक है। Whatever groups are attached in the initial carbonyl carbon, they are attached as it is in the final carbon atom also, ठीक है, with the OH. So this is the basic nucleophilic addition reaction mechanism. Now we are going to look at various different reactions, है ना, बहुत सारे reactions हम लोग को देखने, बहुत ही सारे। ओके, सो अभी क्या करते हैं, तो आपको हम पढ़ा देते, लेकिन रचिता को अटेंड करनी है क्लास अभी। चलिए, आई विल डू वन रिएक्शन, ठीक है ना, मतलब एक रिएक्शन तो नहीं, बहुत सारे रिएक्शन इसमें, लेकिन इनको अगर आप रिपीट कर लीजिएगा आज ही, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। कल हम लोग सीधा सवाल कर लेंगे इसके ऊपर से, फाइन। सो आई एम गिविंग यू द फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ ammonia and its derivative, ammonia and its derivative, ठीक है। तो इट्स मेनली अबाउट प्रैक्टिस, पहले आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद वी विल शो दी एंटायर मैकेनिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू फॉर अमोनिया, है ना। अमोनिया में क्या हो रहा है, प्लीज सी, यू विल हैव कार्बोनिल कंपाउंड लाइक दिस, C double bond O with certain groups attached here, plus we have NH3. In this case what happens, यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है which is कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रह जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलता है NH, ठीक है। सो ये रीराइट दिस रिएक्शन लाइक दिस, कार्बन double bond O. You will understand कि why even though it is a nucleophilic addition reaction, why the double bond is still remaining, वो आप लोग पढ़िएगा when I do the complete mechanism of ammonia. But यहाँ पे इसको ऐसे समझिएगा जरा, NH3 को इस तरह से लिखा जा सकता है, देखिए जरा, कार्बन को I have written as it is, NH3 को H2 and NH अलग से, ठीक है। So what happens, वाटर आपको निकाल देना है यहाँ से H2, ठीक है। You will remove water from here and you will get what, the carbon, the two bonds as it is, double bond N and single bond H. Now in general ammonia derivative जो मिलेगा आप, the ammonia derivative will be something like this, or it will not be written completely like this, but you have to rearrange the ammonia derivative in such a manner that आप H2 अलग कर दे and nitrogen है and there is some Z attached. So right now in ammonia the Z is H, Z is some any other group, ठीक है। आप उसको X भी ले सकते थे, Y भी ले सकते थे, A B C D P Q R कुछ भी ले सकते थे, but taking that as Z. So instead of H you will be having certain fragment which is Z, और आपको क्या करना है, this carbon will be as it is, double bond will be as it is, N और Z आपको कर देना। In all the ammonia derivatives you have to remove water from it, you have to remove water from it, ठीक है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले, so you will tell me what is Z, okay, by the way you will tell me what is the Z. बताइए तो इस रिएक्शन, इस रिएजेंट में Z क्या है, Z के लिए बस बेसिकली क्या करना है आपको, NH2 हटा दीजिए, क्या बच रहा है, इफ यू रिमूव द NH2 फ्रॉम द रिएजेंट व्हाट इज रिमेनिंग, इफ यू रिमूव NH2, हाँ OH ही Z है ना। तो कार्बन डबल बॉन्ड एज इट इज, ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन, और फिर Z लगा देना है। अच्छा बाय द वे यहाँ पे हमने H लिखा है, इसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा, हियर इट विल बी राइटिंग Z, है ना। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बताएं। Yes, sir. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल वन यू हैव C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 NH2, फिर से हम वही पूछ रहे हैं, रिमूव NH2 व्हाट इज रिमेनिंग, NH2 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, NH2. हाँ
नाउ NH2 इज द Z, ठीक है। तो कार्बन, इस फ्रैगमेंट को प्लीज मत भूलिए, कई कई बार बच्चे ना कार्बन के साथ सीधा ऐसे NH2 लिख देते हैं, ठीक है ना, सीधा NH2 नहीं लिखना है आपको। कार्बन डबल बॉन्ड N शुड बी प्रेजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बन डबल बॉन्ड N एज इट इज, फिर आपके पास क्या लग जाएगा Z। व्हाट इज द Z हियर? NH2। फॉर एग्जाम्पल if you have carbon double bond O plus NH2 NH, उसके बाद फिर बेंजीन में, जिसको हम पीएच से शो कर रहे हैं। नाउ हियर व्हाट इज द Z? व्हाट इज द Z हियर? NH2 को हटा दीजिए, क्या बच रहा है? ऋषिता, आपका आवाज ही नहीं आता, यू आर नॉट आंसरिंग ऋषिता। If you remove the NH2, what is remaining, Rishita?